Hello student, let's start with new topic methods of charging. There are total three methods of charging. First one is charging by friction. Charging by friction. In this method, if we start to rub any two objects with each other, then due to transfer of electron from one object to another, both objects get electrically charged. Means जब अपने दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, देन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से मींस इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं. ड्यू टू दैट बोथ ऑब्जेक्ट गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड object which start to release electron get positive charge and object which gain that electron get negative charge. मीन्स जो ऑब्जेक्ट उन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है उस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज और जो ऑब्जेक्ट उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. देन देयर आर सम एग्जांपल रिलेटेड टू चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. When we start to rub glass rod with silk cloth, then due to transfer of electron from glass rod to silk cloth, then glass rod become positively charged and silk rod become negatively charged. Similarly, if we start to rub rubber, amber, ebonite rod, plastic with woolen cloth, then again transfer of charge take place. Means transfer of electron take place. Due to that woolen cloth get positively charged because it start to release electron and that electron gained by rubber, amber, ebonite rod and plastic. Due to that these material get negatively charged. Amber is a type of resin substance of yellow color which can be found in Baltic Ocean which is in Europe. Ebonite rod is a type of hard rubber. Next one is when we start to rub nylon with plastic sheet, then again transfer of electron take place. Means electrons start to release from nylon and that electron get accepted by plastic sheet. Due to that nylon get positive charge and plastic sheet get negative charge. Similarly, when we rub comb with dry hairs, means जब अपने comb को, comb का मतलब होता है कंघा, जब अपने कंघे को या कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो ड्राई हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं एंड कॉम्ब गेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज कॉम्ब स्टार्ट टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिलीज्ड बाय ड्राई हेयर्स. नाउ सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय conduction. Charging by conduction. Now in this method, according to name, it is clear that if two objects are in contact and one object is already charged, then that object start to release that charge on other object. Due to that both objects get equally charged. Means in second method, charging by conduction. In charging by conduction, let we have a charged sphere placed on insulated stand. Sphere is already positively charged. When we provide positive charge to this sphere, charge get distributed over the surface of this conducting sphere because due to mutual repulsion of each other, charge get distributed over entire surface. Now, if we have another sphere which is also a type of conductor placed on insulator, we are using insulator here because we don't want to allow charge to flow in earth. मतलब हम यहाँ इंसुलेटर इसलिए यूज करते हैं कि हम नहीं चाहते कि चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाए. नाउ इट इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड दैट सेकंड स्फीयर डोंट हैव एनी टाइप ऑफ चार्ज. मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है. दिस वन इज अनचार्ज्ड. वेल, इफ बोथ स्फीयर आर इन कांटेक्ट, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इफ बोथ स्फीयर आर इन कांटेक्ट, दिस वन इज फर्स्ट and this one is second sphere and both sphere are in
contact. We know that both spheres are conductor and conductor allow current to flow or allow charge to flow from one object to another. Due to this contact, some amount of positive charge of this sphere get transferred to second sphere. मतलब फर्स्ट स्फीयर का कुछ पॉजिटिव चार्ज उस फिर दूसरे स्फीयर पर ट्रांसफर हो जाता है. क्यों हो जाता है? ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर आउटर सरफेस ऑफ द बोथ स्फीयर. वेल, नाउ at first only sphere A was positively charged and sphere B was neutral, and now both spheres are positively charged. Now separate these sphere, we see that a sphere B get positive charge. अब अगर अपने इन दोनों स्फीयर को अलग कर देते हैं तो हम देखते हैं कि स्फीयर B जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है. Now if we separate both sphere, then we see that sphere B get positive charge on its surface. Okay, then this was method of charging by conduction. Well, in short, in method of charging by conduction, first of all we have two sphere. One is electrically charged and second one is neutral. Both spheres are placed on insulated stand because we don't want to allow to current to flow in earth. हम नहीं चाहते कि जो करंट है वो अर्थ में फ्लो हो जाए, इस वजह से हमने दोनों स्फीयर्स को किस पर रखा है? इंसुलेटेड स्टैंड पर. नाउ अब अपने दोनों स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो हम देखते हैं कि जो चार्ज स्फीयर ए पर है उसका कुछ पार्ट स्फीयर बी पर भी ट्रांसफर हो जाता है. नाउ स्फीयर बी गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड. वेल, अब हम इन दोनों स्फीयर को एक दूसरे से अलग कर देते हैं एंड वी सी दैट अनचार्ज्ड स्फीयर गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड. देन तो ये था मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन. नाउ Now, third method of charging is charging by induction. Third method of charging is charging by induction. Okay, it is a method in which an uncharged metallic ball gets charged without being in contact with charged body. Okay, the key element is without being in contact with charged body. Well, इस मेथड के अंदर सपोज दैट ये अपने पास कोई मेटालिक स्फीयर है एंड आल्सो प्लेस्ड ऑन इंसुलेटेड स्टैंड. Okay, we are using here insulated stand because we don't want to allow current to flow in earth during charging. Well, this one is uncharged. When we take a positively charged rod close to this sphere, then we see that due to the attraction of positive and negative charge of this sphere get close to the positively charged rod. Means there is negative charge on the left side of sphere. मतलब जब हम पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को इस स्फीयर के पास लाते हैं तो इस स्फीयर की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है एंड ड्यू टू द रिपल्शन इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गेट गैदर्ड एट द राइट एंड ऑफ स्फीयर. तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस स्फीयर के राइट एंड पर आ जाता है. नाउ वी सी दैट जो ये स्फीयर है वो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है. दिस वन इज नॉट चार्ज्ड. व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज सपोज दैट -2 coulomb negative charge, then here is +2 coulomb negative charge, positive charge. Due to that, the sum of charge is again 0. Well, now if we earthen this surface or right side of surface,
then we see that electron came out from the earth and start to neutralize right surface of sphere. अब हम अगर इस स्फीयर की राइट सरफेस को अर्थन कर देते हैं या ग्राउंडेड कर देते हैं, ओके, मींस कांटेक्ट टू द अर्थ ले आते हैं, कांटेक्ट टू द अर्थ ले आते हैं, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट केम आउट फ्रॉम अर्थ, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं. दैट मींस now there is only negative charge on sphere. Now next step is, if we release or if we break this contact from earth, then we see that there is only negative charge on the surface of sphere. By removing this rod from here, due to the repulsion of negative charge, we see that total negative charge of sphere get distributed uniformly over entire surface of conductor. Now, then this was method charging by induction. Then charging by induction is a method in which we can charge any sphere but without being in contact with charged body, and charge developed on sphere will be of opposite nature. Means हम इस मेथड से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो अपोजिट नेचर का होगा. अब ये अपोजिट नेचर क्या है? हम इसके पास कौन सी रॉड लाए थे? पॉजिटिवली चार्ज. तो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने इसके लेफ्ट साइड पर या इस पूरे स्फीयर पर, अब जैसा हम देख रहे हैं, उस पॉजिटिवली चार्ज रॉड ने इस पूरे स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया. मींस हमने उस रॉड एंड इस स्फीयर को कांटेक्ट में नहीं लाया. ओके, दिस वन इज की एलिमेंट कि there should be no any contact between charged body and uncharged body. Okay, then this was method charging by induction.